Assalamu alaikum. My topic of presentation today is temporomandibular joint. This temporomandibular joint, it is a synovial joint of the condylar variety. Now, what is this synovial joint? Synovial joint is the joint between the two bones where the synovial fluid is present and the bones are lined by the synovial membrane. Here in the picture you can see this is the temporal bone and this is the condyle of the mandible. These two articulate to form the temporomandibular joint. It is quite evident here. This is the temporal bone and this is the condyle of the mandible, forming a joint called as the temporomandibular joint. Then it is a synovial joint of the condylar variety. Since the condyle of the mandible is involved, so it is a condylar joint, and the type of joint is the synovial because it contains the synovial fluid and it has the synovial membrane. Then what are the articulating surfaces? Articulating surfaces means the two bones which come close together to form a joint here. What are those two bones? What are the surfaces of the bones which articulate with each other? The upper articular surface. The upper articular surface, it is formed from anterior to posterior by the articular tubercle. This is your articular tubercle, this thing, articular tubercle, and anterior part of the mandibular fossa. There is a fossa in the temporal bone. This fossa, ये है ना, ये depression जैसा, this fossa is called as the mandibular fossa. So your upper articular surface is formed by the articular tubercle, ये tubercle जैसा, then the anterior part of the mandibular fossa, and posterior non-articular part is formed by the tympanic plate. यहाँ पे ये tympanic plate होता है. Posterior non-articular part is formed by the tympanic plate. Posterior non-articular part is formed by the tympanic plate. So as far as the upper articular surface is concerned, it is being formed by the articular tubercle, fine, then the anterior part of the mandibular fossa, posterior non-articular part of the tympanic plate. Then inferior articular surface, it is formed by the head of the mandible. Condyle, which is also called as the head of the mandible, inferior surface or inferior articulating surface is formed by the head of the mandible. These both surfaces, they are covered by the fibrocartilage. इनके बीच में होती है, they are covered by the fibrocartilage. They are being covered by the fibrocartilage, and the joint cavity is divided into two. इस joint cavity के दो हिस्से होते हैं, upper articular part and the upper joint cavity and the lower joint cavity. This is I told you that there is a joint between the temporal bone and the condyle. This space has one more thing in between, that is this articular disc. This articular disc divide the joint cavity into the upper part and the lower parts. Then every joint, as you must be knowing, has ligaments. Every joint has ligaments. What are those ligaments here? Can you see the picture clearly? What are the ligaments present here as far as I am talking about the temporomandibular joint? The various ligaments here are, इसको क्या हो गया? The various ligaments here are, you will be having your joint capsule. You will be having your joint capsule. Where will you come across the joint capsule? This is the joint capsule, yellow colored. This is the joint capsule. This is the joint capsule. Can you see this? This is the joint capsule. Joint capsule. Then that is the fibrous capsule. Then you will come across the lateral temporomandibular ligament, this green colored lateral temporomandibular ligament. I don't think it is quite clear to you. You have one minute. I want to see whether these colors are quite evident.
So you have the joint capsule here, this yellow colored, this joint capsule. Then you have the lateral ligament as green colored, this part. Then you have the purple colored sphenomandibular ligament, this, and the red colored stylomandibular is this. Then talking about each one of them. First of all, talking about the joint capsule or the fibrous capsule. It is attached about to the articular tubercle, ठीक है, जो है articulating surface from above. Then the mandibular fossa, fine, and below it is attached to the neck of the mandible. Below it is attached to the neck of the mandible. Above it is attached to the articular your tubercle and the mandibular fossa, and below to the neck of the mandible. This capsule is loose above, and below it is tight. Then you have another ligament that is called as the lateral ligament, lateral temporomandibular ligament. It strengthens the lateral part of the above capsule. That is the जो पहला ligament है, that is the fibrous capsule. Lateral temporomandibular ligament is meant for the strength of the lateral part of the fibrous capsule. Its fibers, as you can see in the picture, they are directed downwards and backwards. Again, they are attached above to the articular tubercle and below to the posterolateral part of the neck, and below to the posterolateral part of the neck. They are above attached to the articular tubercle. Is it evident? They are above attached to the articular tubercle and below to the posterior part of the neck. I will again talk about these two ligaments because they were not quite clear in the previously. So joint capsule, this yellow colored, see this yellow colored capsule here and here also. Then ये इंटरनल व्यू है, ये अंदर से हम देख रहे हैं और ये बाहर से हम देख रहे हैं मैंडिबल और टेम्पोरा मैंडिबुलर जॉइंट. तो यहाँ पे ये कैसे बनता है आपका फाइब्रस कैप्सूल? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द articular tubercle and the mandibular fossa above and neck of the mandible below. This capsule is it is loose above and tight below. Then comes your lateral temporomandibular ligament. It gives support to this fibrous capsule. ठीक है, ये है lateral temporomandibular ligament, green colored. It gives support to this fibrous capsule and it is formed between the articular tubercle above and posterolateral part of the neck below. ठीक है, it gives support laterally to this capsule. Then you have one more ligament, this purple colored sphenomandibular ligament. This is your sphenomandibular ligament. This sphenomandibular ligament, it is attached superiorly. You have a spine of the sphenoid. Superiorly you have a bone called as the sphenoid bone, which has a spine. This is the spine of the sphenoid bone, and superiorly it is attached to the spine of the sphenoid bone, and inferiorly to the लिंग्यूला ऑफ द मैंडिबुलर फोरामेन. जो आपकी मैंडिबल है ना, इसको अंदर से रैमस पे यहाँ पे टंग जैसी एक प्रोसेस होती है, ये दिस इज कॉल्ड एज द लिंग्यूला. दिस इज कॉल्ड एज द लिंग्यूला. टंग जैसी प्रोसेस होती है, इट इज कॉल्ड एज द लिंग्यूला. इट इज प्रेजेंट नियर द मैंडिबुलर फोरामेन. So your sphenomandibular ligament is inferiorly attached to the lingula on the mandible. Then ligament is related posteriorly to lamb. ये जो स्फीनोमैंडिब्यूलर लिगामेंट है ना, इट इज़ रिलेटेड लेटरली टू लैम. इसके लेटरली होता है लैम. ठीक है, अब अगर हम इस स्फीनोमैंडिब्यूलर लिगामेंट देखेंगे यहाँ पे, तो इसके लेटरली क्या क्या इन्होंने बोला. एक तो इसके ऊपर से होगा लेटरली लेटरल टेरिगॉइड मसल, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व और मैक्सिलरी आर्टरी. Three things which will be lateral to this sphenomandibular ligament. You will be having the lateral pterygoid muscle, auriculotemporal nerve and maxillary artery. हो गया laterally. इस ligament के medially मतलब यहाँ की तरफ अब क्या क्या होगा. कॉर्डा टिम्पैना नर्व जो फेशियल नर्व की ब्रांच है, एंड वॉल ऑफ फेरिंग्स. ठीक है, दीज आर द लेटरल एंड मीडियल रिलेशंस ऑफ द स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट. कम टू द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट. दिस रेड कलर्ड इज योर स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्टाइलॉइड प्रोसेस. स्टाइलॉइड प्रोसेस है ये बीक जैसी स्टाइलॉइड प्रोसेस, and it is attached below to the angle of the mandible, and it is attached below to the angle of the
mandible. This stylomandibular ligament, it is nothing, it is a thickened part of deep cervical fascia, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा. And one more significance of this stylomandibular ligament is that it separates the parotid and the submandibular glands from each other. Okay, then comes your articular disc. Can you see something green colored in this picture? That is your articular disc. This is the joint cavity. यहाँ पे बहुत अच्छी joint cavity है. This is the articular tubercle, mandibular fossa. Inferiorly, you have the head of the mandible. So this is the joint cavity. It is being divided into two parts by means of this articular disc. It is divided into two parts by means of this articular disc. This articular disc is oval. ठीक है, that divides the joint cavity into upper compartment and the lower compartment. Fine. The upper compartment में gliding movements होते हैं और नीचे वाले compartment में rotatory और gliding movements दोनों होते हैं. If you can see, the disc has concavo-convex superior surface, concavo-convex superior surface, but concave inferior surface, concavo-convex superior surface, but inferiorly the surface will be concave. The periphery of the disc is attached to the fibrous capsule. ठीक है, जो इसके ये sides है, they are attached to the fibrous capsule. The peripheries are attached to the fibrous capsule. अब इस disc के भी जो ये आपके पास articular disc है ना, it has parts. It has parts in the form of, here you have the anterior extension. ठीक है, anterior extension. फिर यहाँ पे होता है anterior thick band, intermediate zone, posterior thick band and the bilaminar region. So this articular disc, it has 5 parts. It has 5 parts in the form of anterior extension, then anterior thick band, then intermediate zone, then the posterior thick band and the bilaminar region. Bilaminar region contains the venous plexus. Then this disc prevents friction between the articular surfaces. In articular surfaces के बीच में friction है. In articular surfaces के बीच में जो friction होता है, that is being prevented by the disc. And what is the function of this disc now? It acts as a cushion and helps in the shock absorption. ठीक है, it stabilizes this joint. Then this disc has proprioceptive fibers which help in the regulation of the movement of the joint. It has proprioceptive fibers which help in the regulation of the movements of the joint. After that comes the relations of the temporomandibular joint. यहाँ पे आपका ये temporomandibular joint है. Fine. This is the temporomandibular joint. What are the relations? If we talk laterally means इस टाइम यहाँ की तरफ है ना, ये lateral view है तो laterally इस TM joint के ऊपर जो होगा that will come in the lateral relation. First of all, what will we do? We will peel away the skin here, then the fascia, then comes your triangular or pyramidal parotid gland, वो भी हटाया और यहाँ से आएगा ऊपर की तरफ temporal branch of the facial nerve. ठीक है, so you will be having few things in the lateral relation यहाँ पे है सीधे इसके ऊपर, क्योंकि this is the lateral view of the skull what you are coming across. This is the TM joint. क्या क्या यहाँ पे होता है अगर आपको याद हो, पहले skin we will remove, then the fascia, then you have a parotid gland here, वो भी उठाया, then the temporal branch of the facial nerve. These are the structures laterally. Medially हो गया इसके उस साइड, इसके पीछे वाले साइड से क्या होगा यहाँ पे होगा पीछे वाले साइड से you will be having the I don't remember, मैंने मस्त एक निमोनिक यहाँ बनाया था, मस्त. ठीक है, that is for the medial relations. These were the lateral relations. इसके पीछे वाली साइड से क्या होगा यहाँ पे, M for middle meningeal artery and A for auriculotemporal nerve, S for spine of the sphenoid and T for the tympanic plate. Middle meningeal artery इसके पीछे से यहाँ से गई आपकी क्या इसको बोलते हैं maxillary artery, उसने दिया यहाँ पे middle meningeal artery.
तो वो जॉइंट के मीडियल साइड से है, ठीक है। देन यू हैव द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, यहाँ पे होती है, वो भी जॉइंट के उस साइड से है। यू हैव स्पाइन ऑफ द स्फीनॉइड विच आई हैव शोन यू प्रीवियसली, ठीक है, यहाँ पे होती है, ये है स्पाइन ऑफ द स्फीनॉइड, ये भी होती है जॉइंट के मीडियल साइड से। देन यू हैव द टिम्पैनिक प्लेट, ऊपर टिम्पैनिक दिस टेम्पोरल बोन का पार्ट होता है, दैट इज द टिम्पैनिक प्लेट. So these are the four structures which form the medial relation. Then comes the anterior relation. आगे से, अब हो गया आगे से, ये लेटरल व्यू है तो आगे से मतलब यहाँ से, पीछे से मतलब यहाँ से, लेटरली ऊपर से, मीडियली उस साइड से, आगे से। अब इस जॉइंट को क्या क्या है, एंटीरियरली इट विल बी हैविंग द लेटरल टेरिगोइड, यहाँ पे लेटरल टेरिगोइड का पार्ट होगा, और मेसेट्रिक नर्व्स, जो यहाँ पे नॉच होता है ना, मेसेट्रिक नॉच एक होता है, आपको बाय नाउ पता होगी, इफ़ यू हैव रेड द मैंडिबुलर बोन, द नॉच बिटवीन द टू प्रोसेसेस ऑफ द मैंडिबल, एक हो गई यहाँ पे कॉन्डाइलर प्रोसेस, और यहाँ पे होती है दूसरी तोंत जैसी कोरोनाइड प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में जो डिप्रेशन है उसको हम बोलते हैं मेसेट्रिक नॉच। इस मेसेट्रिक नॉच के बीच में से जाती है मेसेट्रिक नर्व और मेसेट्रिक आर्टरी, यहाँ पे मेसेट्रिक नॉच होता है, यहाँ से जाती है मेसेट्रिक नर्व और मेसेट्रिक आर्टरी। सो दे विल कम इन द एंटीरियर रिलेशन, है ना, इस कॉन्डाइल के आगे, they will come in the anterior relation. So anteriorly you will be having the lateral pterygoid here, and you will come across the mesenteric nerve and the mesenteric artery. अब पीछे से क्या होगा, इसके पीछे से यहाँ पे होगा ना पैरोटिड का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, और होगा यहाँ से सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स, वो ऊपर जाएंगी ऐसे, जो टर्मिनल ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड की, और फिर से ऑरिकुलोटेम्पोरल विल कम इन द पोस्टीरियर रिलेशंस. फाइन. अब ये जॉइंट है, इसके सुपीरियर रिलेशन भी होंगे और इन्फीरियर रिलेशन भी. अगर हम जॉइंट के ऊपर से देखें तो क्या होगा, मिडल क्रेनियल फोसा, है ना, स्कल का अंदर वाला हिस्सा होगा, दैट इज द योर इंटीरियर ऑफ द स्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 फोसे. यू हैव द एंटीरियर, यू हैव द मिडल, यू हैव द पोस्टीरियर. दिस लाइज जस्ट बिलो द मिडल क्रेनियल फोसा, ठीक है. और यहाँ से होती है मिडल मेनिंजियल वेसल्स, उनके अगर आपको याद हो, you have the impressions of these vessels. So superiorly you will be having the middle cranial fossa and the middle meningeal vessels. Inferiorly यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जाती है अंदर maxillary artery और vein, ठीक है. Inferiorly you have the horizontally running maxillary artery here and the maxillary vein, maxillary artery and the maxillary vein. So these are the relations of the TM joint. Then comes the blood supply. Blood supply is by means of superficial temporal and maxillary artery. ये है जी आपकी superficial temporal, ऊपर जाती हुई यहाँ से, and this is your maxillary artery. Superficial temporal and the maxillary artery. Can you see? Superficial temporal and the maxillary artery. These are the two terminal branches of the external carotid artery. This is the blood supply, and veins of course follow the artery. Then nerve supply is by means of the auriculotemporal nerve and the mesenteric nerve. यहाँ से ये जा रही है आपकी ऊपर auriculotemporal nerve, और यहाँ से होगी आपका इधर mesenteric nerve, इधर आपकी mesenteric nerve, auriculotemporal nerve and the mesenteric nerve. Auriculotemporal nerve is just in front of ear, and mesenteric nerve is found in the mesenteric notch. Mesenteric notch कहाँ पे होगा, और mesenteric notch is present between the two processes of the mandible, that is the your condyle and the coronoid process. Then you have the various movements. सबसे ज़्यादा important यही movements होते हैं at the temporomandibular joint. You have the depression. Depression हो गया, मुंह खोला हमने, हाँ, that is the depression. You have the elevation, closing of the mouth. You have the protrusion, protraction of the chin, आगे की तरफ chin. You have the retraction, पीछे की तरफ chin. Then you have lateral or side to side movements in chewing and grinding. Fine, these are the movements. Depression here means down, elevation means up, then you have the protrusion means forward, movement of the chin, retraction means retrusion means posterior movement of the chin, then you have the various side to side or lateral movements in chewing and grinding. Let's talk about the depression. Can you see here this open mouth, here your mandible is being depressed, fine. So this particular action is called as the depression.
दिस इज़ द एक्शन ऑफ द TM जॉइंट. इस जो ये जॉइंट है ना, यहाँ पे योर मूवमेंट्स कैन बी पैल्पेटिंग प्री और ये है ना आपका एयर, उसके आगे पॉइंट है प्री ऑरिक्यूनल पॉइंट, और इनटू द या तो हम फिंगर डालेंगे इन फ्रंट ऑफ द एयर, या हम डालेंगे इनटू द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस टू पैल्पेट द वेरियस मूवमेंट्स ऑफ दिस जॉइंट. अब जो मूवमेंट्स एट दिस जॉइंट है ना, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द मेनिस्कोटेम्पोरल कंपार्टमेंट and the meniscomandibular compartment. Since they have the articular disc in between, तो जो अपर वाले पार्ट में मूवमेंट्स होंगे दे आर द मेनिस्कोटेम्पोरल, एंड लोअर वाले पार्ट में जो मूवमेंट्स होंगे दे विल बी मेनिस्कोमैंडिबुलर. Then in forward movement और protraction, can you see, वो आपको मैंने दिखाया डिप्रेशन. Here this is the protraction. प्रोट्रैक्शन हो गया आगे की तरफ चिन लेना, रिट्रैक्शन हो गया पीछे की तरफ चिन लेना. इन फॉरवर्ड मूवमेंट और प्रोट्रैक्शन यहाँ पे क्या होता है, जो आर्टिकुलर डिस्क होती है, हमने बोला ना आर्टिकुलर डिस्क होती है इस जॉइंट के बीच में, जो जॉइंट को दो हिस्सों में डिवाइड करती है. इट ग्लाइड्स फॉरवर्ड्स, ये आगे की तरफ जाती है, ओवर द अपर आर्टिकुलर सरफेस, द हेड ऑफ द मैंडिबल मूविंग विथ इट. ठीक है, ये क्या करती है, इस प्रोट्रैक्शन में क्या हो जाता है, आपकी आर्टिकुलर डिस्क और हेड ऑफ द मैंडिबल ग्लाइड करते हैं आगे की तरफ ओवर द अपर आर्टिकुलर सरफेस. देन इन रिट्रैक्शन द आर्टिकुलर डिस्क ग्लाइड्स बैकवर्ड over the upper articular surface, taking the head of the mandible with it. So in protraction, both the head of the mandible and the articular this disc moves forward, glide forward over the upper articular surface. But in retraction,